Dear viewers, Assalamu alaikum. This is Muhammad Shafiq from British Institute. Hope you will be pretty good. Today in this video, I'll explain the word witness in detail along with its usage and synonyms. Before moving on to the topic, I ask you to like, share and subscribe my channel if you like this video. Also, don't forget to click on the bell icon so that my upcoming videos can easily reach you. So let's get started. Witness. Word forms: plural, third person singular, present tense, witnesses, present participle witnessing, past tense and past participle witnessed. Meaning: number one, to see something happen, particularly an accident or crime. गवाही देना, शहादत देना, साबित करना. For example, I arrived home just in time to witness my brothers were quarreling to each other for property. मैं ऐन वक़्त पर घर पहुंचा और देखा कि मेरे भाई जायदाद के मामले पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं. किसी वक़ूए वगैरह को अपनी आंखों से देखना. For example, did you witness the accident? यह हादसा तुमने खुद देखा. Synonyms: see, mark, view, watch, note, notice, attend, observe, perceive, look on, be present at. Number two, to testify that a document or signature is correct or authentic. किसी दस्तावेज या दस्तखत के सही या मुस्तनद होने की गवाही देना. For example, ask a friend to witness your signature on the application. किसी दोस्त से दरखास्त पर अपने दस्तखत का गवाही करने को कहे. Synonyms: countersign, sign, endorse, validate. Number three, to experience important events or changes. अहम वाक़यात या तब्दीलियों का तजुर्बा या मुशाहिदा करना. For example, people have witnessed an increase in religious intolerance. लोगों में मजहबी अदम बर्दाश्त में इजाफा देखा गया है. As Allah says in Surah Nisa, ayat number 135, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil waladaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu ula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talaw aw ta'rizu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. O believers, staunch in justice, bearing witness merely for the sake of Allah, even if the witness is against your own selves, or your parents, or your relatives, whether the person against whom is the evidence is rich or poor. Allah is greater well-wisher of them both than you are. So do not follow the desires of your ill-commanding selves, lest you swerve from justice. But if, whilst giving evidence, you twist your statement or evade the truth, then Allah is indeed well aware of all the works that you are doing. ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो. अगर कोई अमीर है या फकीर तो खुदा इनका खैरख्वाह है. तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना. अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान लो को खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है. Noun: someone who sees an event happening, particularly a crime or an accident. गवाह, शाहिद जो हल्फिया शहादत दे. For example, according to eyewitness,
The robbery was carried out by two neighbors. यानी शाहिदीन के मुताबिक डकैती की वरादत दो पड़ोसियों ने की. Number 2. Somebody who is asked to be present at a specific occasion and sign their name in order to prove that things have been done correctly. जो किसी दस्तावेज पर किसी शख्स के दस्तखत की तस्दीक करे. For example, I signed the Treaty of State Life in the presence of 3 witnesses. मैंने 3 गवाहों की मौजूदगी में स्टेट लाइफ के मुआहदे पर दस्तखत किए. Number 3. Law. Somebody who appears in a court of law to say what they know about a crime or other event. कोई शख्स जो अदालत में ये कहने के लिए हाजिर होता है कि वो किसी जुर्म या दूसरे वाक़े के बारे में जानता है. For example, 5 witnesses are expected to testify at the trial today. आज मुकदमे में 5 गवाहों की गवाही मुतवक्को है. Number 4. The manner of giving evidence or example of what has been said. कही हुई बात की शहादत या मिसाल पर पेश करने का अंदाज. For example, he is an accomplished dancer. Witness his performance last month at the Alhamra Hall. वो बड़े पाए का डांसर है. देखो फन का वो मुजाहिरा जो इसने पिछले महीने अलहमरा हॉल में किया. Idiom. Bear witness to something to show that something is true or exists. किसी बात की सदाकत की गवाही देना या किसी बात पर ईमान का इकरार. For example, the numerous awards on the walls bear witness to your great success. दीवारों पर लगे बेशुमार अवार्ड्स आपकी कामयाबी की गवाही देते हैं. Collocations in a court of law. Number 1. A key witness. A very important witness. Aham gawah. For example, he is expected to be a key witness at the trial. तवक्को है कि वो मुकदमे में अहम गवाह होंगे. A principal witness. A main witness. Asal gawah. For example, he was charged with robbery, but the principal witness did not come and the charges were dismissed. इस पर डकैती का इल्जाम लगाया गया, लेकिन असल गवाह नहीं आया और इल्जामात को खारिज कर दिया गया. An expert witness, somebody who has special knowledge, for example, of medicine and who talks about it in a court. कोई ऐसा शख्स जिसके पास खास इल्म हो मसलन दवा का और जो अदालत में इसके बारे में बात करता है. For example, the court had to choose between the conflicting testimonies of expert witnesses. अदालत को माहिर गवाहों की मुतज़ाद गवाहियों में से इंतखाब करना था. Hope you have learned something from this video. If yes, then like and share this video with your friends. Don't forget to subscribe this channel as it is your own channel. Thanks. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.